Well, respected participants, I'm sure that I'm audible. So, without even wasting a single second, let's proceed further. आज हम discussion में we want to discuss some most important questions from the history, 18th century, and from this part of history, we will try to explore all those questions, all those important questions that been the part of previous interviews, and it is very important and pertinent to mention here that you need to make a list of these questions, and answers will be definitely the subjective one, but your detailed approach, your insight about these questions is very important. So today's session will be a relatively shorter session because in today's discussion we will just discuss important questions, and I will let you know in case you are going to have these questions in your interview, how you are going to tackle these questions and what may be the most appropriate answer of this question. So previous interview questions, and this time we have 18th century. So 18th century, the most important century. Well, so proceeding further with this century, let me tell you once again, this century was famous because of its prose. First question that we have in front of us, just let me put it somewhere else. Okay, all right. Okay, the first question is, it is basically the comment by Matthew Arnold that is it true that the 18th century is the age of prose and reason? So you need to understand two things while answering this question. Whenever you say that the 18th century is the age of prose and reason, it's not very simple. Like, yes, it is the prose of reason. Maybe whenever you speak about the prose, whenever you speak about 18th century, you need to understand that this age is famous for prose. And the prose, what sort of prose we have here? Rhymed prose. So you need to mention rhymed prose as well. The mistake of the aspirants and the downfall of the aspirants start when they simply say, yes, this is the age of prose and reason, but they do not mention different types of reasons here. So you need to mention the prose, definitely the rhymed prose. You need to mention why 18th century is considered the age this age is famous for the barren poetry. That means that it did not produce anything in the poetic genre. So you know the contribution of those people are like we have Daniel Defoe here. So while you're answering this question, first of all, you need to mention the contribution of Daniel Defoe. I'm sure a lot of my experience Defoe. So Daniel Defoe is important, and I'm going to give you a detailed insight about this person because Defoe was the most copious writer. He is not only famous for his Robinson Crusoe, but he gave a lot many other things. Like we have Mole Frangers, we have Roxana, that is non-fictional prose. So after Daniel Defoe, you need to mention another important writer whose name is John Arbuthnot, Arbu, John Arbuthnot. And if you want to search it later on, the years are from 1667 till 1735. So remain specific while you're answering these questions, but without mentioning the details of Daniel Defoe, without mentioning the details of Mr. John, and definitely the history of John Bull,
you cannot proceed further. So the first question that has been asked a lot many times, and that is the reason I'm giving specific attention on this question is you need to understand without mentioning Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Jonathan Swift, you cannot complete the answer. So Jonathan Swift is a third in-person name, and Jonathan Swift is famous for prose satire. And the reason is that he was not an ordinary writer. He was not a common writer. Jonathan Swift was dominating the 18th century. So you need to mention these three names, Jonathan Swift, Daniel Defoe, and John Arbuthnot. So these names are important. Well, that is the answer of first question. The second important question that was asked in 2017 specifically, that was about periodical. But before even periodicals, we have another important question, that is, the exact question is that from Swift to Edison, just listen the question, from Swift to Edison, it is like we are coming from a real to something superficial. So whenever you talk about 18th century, remember Jonathan Swift and Edison, they're important because they were contributing in the genre of prose. Edison was the person who perfected periodical essays. Periodical essays जिनको इन्वेंट किया था स्टील ने, कैटलर के साथ 1709 में लिखने से उसने शुरू किया था. कैटलर के साथ उसने कोलैबोरेट किया बाद में, और हमने ये देखा कि एडिसन एंड स्टील ने इसके ऊपर काम किया. But the question is that from Swift to Edison, it is like coming from a real to something superficial. The point here is that the Edison was a genius person. Edison was that person जो periodical essays के साथ define कर रहा था personalities को, areas को, social errors को, social evils को, life को, तमाम की तमाम चीजों को. और दोनों का प्रोज स्टाइल मुख्तलिफ था, एडिसन का और स्विफ्ट का. So you need to talk about you need to give a comparison between the style of Edison and Swift. You need to talk about the refinement. You need to talk about the comments of Dr. Johnson on Edison and Swift. So then आपको जो है वो आपका जो second question है इसका आंसर up to the mark मिलेगा. इसका आंसर आपको accurately मिलेगा. That is the second question. In third, हमारे पास तीसरे नंबर पर the third question is about Dr. Samuel Johnson. मेरी रिकमेंडेशन है कि when you are preparing Dr. Samuel Johnson की सिर्फ initial details को ना देखिएगा. Do not go for the superficial details of Dr. Samuel Johnson. Dr. Samuel Johnson, if you're not noting down all the things, you are requested to note it down because do not rely on the recordings. Most probably you're not going to get the recordings of these sessions. So do not waste your time and note down all these important questions. And if you are not preparing your own notes, you are wasting something that is really important. So you need to note down all the questions. You need to answer these questions. Like if you are sitting in front of a panel and you are given the same questions, what is your behavior? What is your response? So you are able to bring something that is important. You are able to understand the gist of the question. So इसके ऊपर ख़ुसूसन देखिएगा. Dr. Samuel Johnson के बारे में जब भी बात करते हो, तो aspirants जो हैं, they remember about the dictionary. कैसा डिक्शनरी लिखी थी? All right, fine enough, fair enough.
but you need to read the critical work. And his critical work is, what is the name of his critical work? Let's see how many of you know the answer. Do you know the critical work of Dr. Samuel Johnson? Maybe any random guess. Okay, one answer is, all right. Is there any other answer? Apart from Aisha, is there any other answer? He wrote about Shakespeare, Vanities of Human Natures. I think that there is something wrong with the title here. It's fine. Maybe you need to Google it after some time. Well, thank you so much. Thank you, everyone. We have received a lot many responses, but the correct answer is the lives of the poets. And yes, Aisha's answer is correct. And why we need to read the critical work that the lives of the poet? The thing is that as a critic, he is giving you the errors, he is giving you the exact picture of the personality. So whatever you want to see in the personalities, Dr. Johnson's lives of the poet is important. So Dr. Samuel Johnson and the critical work of Dr. Samuel Johnson, the lives of the poet is important. That is my recommendation. Do not skip that. And yes, there was a question from the lives of the poet that why Dr. Samuel Johnson defined and wrote all the things in the lives of the poets. So another dimension of the question was how Dr. Samuel Johnson is different than that of Ben Jonson, Dryden, and Alexander Pope. Definitely, Ben Jonson, I'm talking about, was from Elizabethan era. But when you talk about John Dryden and Alexander Pope, they were leading in the same age, because Dr. Samuel Johnson was carrying forward the legacy laid down by Dryden and then Alexander Pope and then Dr. Samuel Johnson himself. So you need to understand the difference and you need to understand the work of Dr. Samuel Johnson. The fourth question about 18th century. This age, why this age is famous for biographies and letters only. So why? The question is why. They are not asking, they're not telling you, like, is it the age of biographies or letters? But the question is why this age is the age of biographies or letters. So, in this age, if I were you, definitely, when you need to answer these questions, you need to remember the age, the writers, the people who are living in any specific age, you cannot detach them from their surroundings. I have mentioned it 1,000 times that your writers, they're not living in vacuum. Definitely, they are the part of the society where you and me are living. So, in case the COVID-19 is going to give something, the long-lasting impression on Pakistani society, definitely the society was playing its role even in the 18th century. So this age has given biographies, letters, but we need to justify the question why here. So the answer is basically the after periodicals. So when we talk about periodicals, after periodicals, the people, they were quite interested in reading the biographies. They were interested in reading all the things that were related to people. They were interested in traditions. They were interested in Oliver Goldsmith. So that is the reason we have these writers who are contributing in biographies. Saw the establishment of historiography. And the very reason is that we have those writers who were contributing and who was setting the trend for the upcoming writers. So yes, that is the reason we have biographies or the letters very common in this age.
पांचवा सवाल जो इस एज से है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये अगर कोई भी 18th सेंचुरी की तरफ जाता है तो उससे ये जरूर पूछा जाएगा, दैट इज माय रिकमेंडेशन, इसको कभी भी ना छोड़िएगा। दिस क्वेश्चन इज वंस अगेन अबाउट पीरियोडिकल एसेस। इनको काफी इजी ना लीजिएगा पीरियोडिकल एसेस को, कि ठीक है पीरियोडिकल एसेस जो हैं ये स्पेसिफिकली क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएंगे जो 18th सेंचुरी में इंटरेस्टेड हैं और जो क्लासिकल लिटरेचर में इंटरेस्टेड है। बट अगर आपसे भी रैंडमली पूछा जाते हैं, यू नीड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। क्या वजह है कि पीरियोडिकल एसेस 18th सेंचुरी में ही पैदा होते हैं और 18th सेंचुरी में ही खत्म हो जाते हैं? वो कहानी जो टैटलर से शुरू होती है, टैटलर आप जानते हैं पीरियोडिकल है, और वो खत्म हो जाती है बाद में, इसकी वजह क्या है? सो आपको बताना है कि इसकी वजह ये है कि मुमकिन है आप फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसको रिलेट करना चाह रहे हो। सो मुमकिन है आप मैथ्यू आर्नल्ड की बात करना चाहते हो कि हमारा जो जो लिटरेचर है 18th सेंचुरी का वो एक्सीलेंट है, इंडिस्पेंसिबल है, लेकिन अगर हम इसके अंदर जिद्दत लाते चले जाते हैं। सो हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हम पीरियोडिकल एसेस की शॉर्ट लाइफ की बात करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड द शॉर्ट लाइफ उन चीजों की होती है जो कि लाइफ से रिलेटेड होती है। जिंदगी खत्म हो जाने वाली चीज है। मोक एपिक्स खत्म नहीं होती हैं, नॉवेल्स खत्म नहीं होती हैं, वो नॉर्मल लाइफ से थोड़ा हटके होती हैं। But when you're talking about periodical essays, they are just giving you the commentary of the social life. एक खास वक्त में वो पॉपुलैरिटी पे चले जाते हैं, उसके बाद वो उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। दैट इज द रीजन एडिसन और स्टील ने इतने ज्यादा नेम चेंज किए, वरना उन्हें नेम चेंज करने की क्यों जरूरत पेश आती? सो यस, दिस इज द रीजन। आखिरी इसके ऊपर पीरियोडिकल एसेस पर जब आप बात करेंगे तो एक चीज नोट कीजिएगा, पीरियोडिकल एसेस जो है ये एक डेलिकेट सॉर्ट ऑफ लिटरेचर था, आम लोगों के लिए लिखा गया था, आपके लिए, मेरे लिए, ऐसे लोग जो कि जिंदगी से रिलेटेड हैं। सो इन क्वेश्चंस को बड़े ढंग से ट्रीट किए। सो आई एम आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस इन डिटेल, वरना आपको पता है हमारी रूटीन ये है कि मैं सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स देता हूँ। पीरियोडिकल एसेस आपकी लाइफ को डिस्कस करते हैं, वहां पे लिटरेचर से रिलेटेड चीजें नहीं थी कि बहुत ज्यादा लिटरेचर से रिलेटेड चीजें। उसमें क्या था, द डेली लाइफ इवेंट्स वाज गोइंग ऑन। सो मॉरल टेम्पर के मुताबिक था, जो एज चल रही थी, एडिसन और स्टील ने कोशिश की थी कि उसी एज को डेलिकेटली वो मेंशन करें। दे वर नॉट गिविंग यू द पिक्चर्स जिसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती चले जाती। सो आपको पीरियोडिकल एसेस का ओरिजिन, इसकी ग्रोथ, इनकी वैल्यूज, पीरियोडिकल एसेस और सोशल एसेस के अंदर फर्क, ये पता होना चाहिए। और अगर किसी को ये नहीं पता कि पीरियोडिकल एसेस क्या है, अब ये टैटलर से आनी शुरू होती है, इसको जरूर देखिएगा और डिटेल से देखने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन जो है वो ये था कि इससे पहले बट व्हाट इज द रीजन that we have the Tatler as the most popular one? Tatler की ही popularity की वजह क्या है? Why Tatler is the most famous one? That is very important question from this 18th century. देखिए periodical essays जो है ना, जब शुरू होते हैं 18th सेंचुरी में, जब भी किसी एज को समझना है उस एज की स्पिरिट को समझने की कोशिश कीजिए। जब भी किसी एज को समझना है, ये समझने की कोशिश कीजिए कि उस एज की वो हिट किन लोगों को कर रही है। एलिजाबेथन एज में हमारे पास किंग्स और क्वींस हैं जिनको हिट कर रही है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट क्लासेस ऑफ रीडर्स हैं। This time we have those people who are actually the common people, those people who belong to the normal spectrum of the life. So periodical essays ऐसी चीजें जो पॉपुलर होंगी, जिनका कैनवस ब्रॉडर होगा, वो डेफिनेटली पॉपुलर होंगी। आप इनमें कोट कर सकते हो कुछ चीजों को, आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए, जब उसने एक खास जेंट्री के लिए लिखा, एक खास
स्पेसिफिक पर्सनालिटी के लिए लिखा, आज उसके सोनेट उस तरह से नहीं है जिस तरह से उसके जो है वो ट्रेजेडीज हैं, क्योंकि ट्रेजेडीज में वो आम लोगों को डिस्प्ले कर रहा है। ट्रेजेडीज में वो सब कुछ हो रहा है जो आम लोगों के साथ होते हैं, जो हमारे पास होता है। लो देख लीजिए, व्हेन ही इज किलिंग डेस्टिमोना, आज भी लोग कत्ल करते हैं। जब हम मकबूत देखते हैं, आज भी लोग जो है वो इक़्तिदार के लिए बादशाहों को कत्ल कर देते हैं। जब हम किंग लियर देखते हैं, ऐसा होता है कि डॉटर्स या जो सन्स हैं वो अपने वालिदैन को निकाल देते हैं। बट जो चीज एक स्पेसिफिक तबके के लिए लिखी जाती है वो कभी पॉपुलर नहीं होती है, लेकिन जो चीज आम लोगों के लिए लिखी जाती है वो जरूर पॉपुलर होती है। सो टैटलर जो है ये सोशल और मॉरल क्रिटिसिज्म के ऊपर बात करता था। एडिसन और स्टील ने लोगों को बहुत करीब से समझा और उसके बाद इन चीजों को उसने बयान करने की कोशिश की। एक मिडिल क्लास सोसाइटी को उसने हाईलाइट किया। 7th नंबर पे 3 इंपॉर्टेंट राइटर्स मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, इनको जरूर देख लीजिएगा। जॉनसन मैंने पहले बता दिया, जॉनसन को दोबारा से यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा क्योंकि दिस टाइम यू नीड टू पुट अ कंपैरिजन बिटवीन जॉनसन। इसके साथ जो है ओलिवर गोल्डस्मिथ की बात मैं करूंगा। गोल्डस्मिथ इज वेरी इंपॉर्टेंट राइटर और गोल्डस्मिथ के 2 काम जो हैं वो 2 के एलिमिनेशन 2 वर्क आपकी हाईली इंपॉर्टेंट रीडिंग्स में भी शामिल हैं। किसी ने पढ़े हैं वो काम जो है, जो आपके साथ लिस्ट शेयर की गई है उनमें भी शामिल है। शी स्टूप्स टू कंकर और एक और है, तो बता सकेगा व्हाट इज द नेम ऑफ द अदर वर्क? ओलिवर गोल्डस्मिथ का। जॉनसन को, ओलिवर गोल्डस्मिथ को, इन दोनों को देखिएगा। ओह या, विकर ऑफ द विकफील्ड, वेरी गुड आयशा। इन दोनों पर्सनालिटीज को अगर आप इग्नोर कर देते हो और अगर आप सेटायर 18th सेंचुरी की ले रहे हो, सेटायर आपका फेवरेट जॉनरा है, आप जोनाथन स्विफ्ट को ले रहे हो अपने फेवरेट जॉनरा, फेवरेट प्रोज को ले रहे हो और इसमें से जोनाथन स्विफ्ट आपका फेवरेट राइटर है, तो आपको ये कभी नहीं भूलना कि स्विफ्ट और एडिसन का कंपैरिजन भी आपको पता होना चाहिए। और इनकी सेटायर जो है वो ज्यादा मशहूर थे। ओके, इनकी सेटायर जो है वो ज्यादा फेमस थी और सेटायर की वजह से ये जाने जाते हैं। 9th नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन है, 18th सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रोज को ले लेते हो, अपने मेंशन करते हो, फिर भी आपको इसी सेंचुरी में से क्वेश्चन को आंसर करना पड़ता है। नॉवल की तरफ चले जाते हो, फिर भी पीरियोडिकल एसेस के ऊपर बात होती है। आप यू शुड एक्सपेक्ट अ लॉट मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस साइड। नॉवल, नॉवल आप जानते हो कि जब भी हम नॉवल की बात करते हैं, 18th सेंचुरी इज कंसिडर्ड द सेंचुरी की जिसमें इसका राइज होता है, जिसमें ये नॉवल ऊपर आता है। सो क्वेश्चन ये है कि अगर हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं और उसमें हम नॉवल के ऊपर जब बात करते हैं, तो नॉवल, इज इट ट्रू दैट नॉवल इज द गिफ्ट ऑफ 18th सेंचुरी? तो दूसरा क्वेश्चन की फॉर्म ये हो सकती है कि व्हाट इज द रीजन व्हाई नॉवल इज कंसिडर्ड द मोस्ट फेमस एंड इंपॉर्टेंट आउटपुट ऑफ 18th सेंचुरी? तो शायद यहाँ पे जब आप राइज ऑफ नॉवल पे बात करना चाहते हो तो आपको कुछ चीजों को ढंग से समझने की जरूरत है। राइज ऑफ नॉवल को अपने आंसर को कैटेगोरिकली मेंशन कीजिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दैट मीन्स कि जब आप अपने नॉवल के ऊपर बात करते हो तो सबसे पहले सोशल एनवायरनमेंट से क्वेश्चन का आंसर शुरू होना चाहिए, आपको बताना चाहिए। एंड यू आर इंस्ट्रक्टेड टू कोट डेविड डिशेस। डेविड डिशेस को कोट करना जरूरी है। ऑलवेज ट्राई टू स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जायंट्स। खुद से कोशिश कीजिए कि आप जरूर ऐड करें चीजें, बट जो बड़े बड़े नाम हैं जब आप उनको शामिल करोगे ना तो फिर आपका आंसर बड़ा सॉलिड हो जाएगा। देखिए, मिडिल क्लासेस, आप जब भी अपना आंसर दे रहे हो वहां पे इंटरव्यू में, यू नीड टू मेंशन सर starting right from the quotation of David Dishes. Whenever we talk about any piece of literature, a writer is supposed to write for the public. And in 18th century, we have the middle class as the product of this century.
So the writers, they were writing to appeal to middle class. They were writing according to the sensibilities of that particular class. So in this age, we have social backgrounds, we have significant human behavior, we have public attitude. So all these things are there. तो नॉवल मिडिल क्लासेस की ही प्रोडक्ट है, और इसके अंदर एक और चीज जो है 18th सेंचुरी के अंदर जो बड़ी फेमस है और जो बड़ी ज्यादा काउंट की जाती है, वो ये है कि इससे पहले डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलना शुरू हो जाती हैं। ये किस तरह से रिलेटेड हैं दोनों मूवमेंट्स, इस पर ढंग से बात की हुई है मैंने हमारे जो रोमांटिक एज से मुतल्लिका जो लेक्चर है, और जब इससे पहले हमने बात की थी डिक्लाइन ऑफ ड्रामा भी आप मेंशन करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नॉवल लिटरेचर में चाहे आप अदब की बात कर लो, लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ नॉवेल्स 1737 की भी आप बात करोगे, लेकिन एक जॉनरा का जब डिक्लाइन होता है तो तभी दूसरा जॉनरा जो है वो परवान चढ़ता है। डिक्लाइन ऑफ ड्रामा में क्या हुआ था, एलिजाबेथन सेंचुरी जो कि एलिजाबेथन एज थी, बड़ी फेमस थी ड्रामा के लिए। अब वहां पे तो कोई इस तरह का एक्ट नहीं है, लेकिन 1737 में एक एक्ट आ जाता है, दैट इज द लाइसेंसिंग एक्ट, जिसका मतलब ये होता था कि जो पॉलिटिकल सटायर है उसको कर्ब किया जाए। आप इसके ऊपर भी बात करोगे। फिर आप जो है वो बात करेंगे कि राइटर्स जो हैं वो अपने आप को आजाद महसूस करते थे व्हेन दे वर राइटिंग द नॉवेल्स। ड्रामा के अंदर उस तरह से आजादी नहीं थी। फिर आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि देखें जब आप नॉवेल को लिख रहे होते हो, राइटर फ्री होता है, वो उसको कहना होता है, ड्रामा में तो करके दिखाना होता है। ड्रामा परफॉर्म करने के लिए होता है, और वो एज के टेम्पर के मुताबिक होता है। जिस तरह से मोल फ्लैंडर्स हैं, जिस तरह से टॉम जोन्स जैसे जो नॉवल हैं, पाकिस्तानी मुआशरे में ऐसे नॉवल परफॉर्म किए जाए तो वो परफॉर्मर्स जो है उनका तो सर कलम कर दिया जाए। इवन ये नॉवेल्स, ये वो वाले नॉवेल्स है जो जहां पे जिस कंट्री में लिखे गए वहां पे इनको बैन कर दिया गया। D.H. लॉरेंस के नॉवल द रेनबो एंड देयर आर लॉट्स मेनी अदर नॉवेल्स आर देयर। तो नॉवेल के अंदर फ्रीडम ज्यादा होती है। दूसरे नॉवेल के अंदर बैकग्राउंड ज्यादा दिया जाता है। तो इसलिए जब राइटर्स हैं वो फ्रीडम ज्यादा महसूस करते थे, तो इसलिए वो वहां पे आने चले गए। और याद रखिएगा इकबाल ने भी कहा है कि जिस भी चीज को जितना दबाओगे वो उतनी ही चीज ऊपर उठती चले जाती है। नॉवेल के अंदर जब भी आप बात करोगे आपको रिलेट करना है यहाँ पे क्लासिकल लिटरेचर के साथ, क्लासिकल रिस्ट्रेंट के साथ। नॉवेल के पास जो है वो कोई क्लासिसिज्म में कोई मिसालें नहीं थे। ड्रामा तो हमारे पास तब से शुरू हो जाता है जब हमारे पास ग्रीक लिटरेचर आता है। इंग्लिश ड्रामा तो कहीं बाद की पैदावार है, लेकिन जब हम नॉवेल की बात करते हैं, नॉवेल के पास उस तरह से प्रेसिडेंट्स नहीं होते हैं। नॉवेल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है ड्रामा से, पोइट्री से। और 18th सेंचुरी में हमारे पास अगर कोई राइटर जो है, मिसाल के तौर पर अगर 18th सेंचुरी में वो कोई एपिक लिखना चाहता था, कोई पेस्टल एलिजी लिखना चाहता था, कोई ओड लिखना चाहता था, तो उसको क्लासिकल उसको देखना पड़ता था, उसको शायद ग्रीको रोमन्स को देखना पड़ता था। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द 18th सेंचुरी, एक नॉवेलिस्ट इग्नोर कर सकता है सारी अथॉरिटीज को, वो तमाम चीजों को इग्नोर करेगा। और जैसा कि आप जब उसको फ्लेमिंग को, फील्डिंग को पढ़ते हैं, हेनरी फील्डिंग को, उसने क्या किया, हेनरी फील्डिंग ने सारे की सारे एंशियंट्स को इग्नोर किया अपने काम के अंदर। सो ये हमारे पास जो है वो इसकी फर्दर प्रोसीड हो सकता है, और राइज ऑफ द नॉवल में आप इस तरह से अपने क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। खैर इसके अंदर जो है आप जब फिर बता सकते हैं कि रीजंस क्या थी, मैंने आपको ब्रीफली बता दी, और आप तमाम की तमाम चीजों को मेंशन करोगे। अच्छा, नॉवेलिस्ट की जब भी आप बात करोगे ना, एक नाम कभी ना भूलना, और इसको ठीक ठाक पढ़ के जाना, तैयार करके जाना। और ये है हमारे पास फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। कौन है जी हमारे पास फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, जानते हैं आप? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन? आई एम श्योर देयर आर लॉट्स मेनी एस्पिरेंट्स दे आर फेमिलियर विद द नेम। तो आप जानते हैं हाँ जी, हेनरी फील्डिंग है जी। आज का सेशन शॉर्टर होगा रिलेटिवली, हमने सिर्फ 40 मिनट्स में इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बताने थे। सो हम अपने इंटरव्यूज जो हैं वो कल पे हमने रखे हुए हैं।
सो आज ये क्वेश्चन नोट करते समझ आइएगा। फील्डिंग को इग्नोर ना कीजिएगा नॉवल अगर आपका फेवरेट जॉनर है ना। फील्डिंग को लोग क्या करते हैं कि ले लेते हैं नॉवल को अपने फेवरेट जॉनर के तौर पर, लेकिन फील्डिंग को सिर्फ वो इतना ही जानते हैं कि ये फादर ऑफ जो है इंग्लिश नॉवल है। देखिए, इससे पहले तो रिचर्डसन भी लिख रहा था, रिचर्डसन तो फादर नहीं बन सका। उसकी क्या वजह? हमारे पास बहुत और राइटर्स भी थे, डैनियल डेफो भी है, जॉनथन स्विफ्ट भी है, सो व्हाई हेनरी फील्डिंग? तो हमें ये समझने की जरूरत होती है कि जब हम फील्डिंग की बात करते हैं तो फील्डिंग एक ऐसा पर्सन, दैट इज द क्वेश्चन एग्जैक्टली, दैट व्हाई ही इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। देखें, फील्डिंग जो है वो जब लिखता है वो पीरियड है इन तमाम से। रिचर्डसन से अगर आप इसका कंपैरिजन कर लें, रिचर्डसन जब लिखता है तो वो मजहबी, जैसे वो आजकल बड़ा पाकिस्तान में चल रहा था मजहबी टच देने, तो वो तो मजहब की बातें करता है। तो फील्डिंग एक ऐसा पर्सन है जो जब भी लिखता है वो कोशिश करता है कि आपको रियल पिक्चर दे सके। सो रिचर्डसन ने जब भी लिखता है, रिचर्डसन ने लिखा अपनी शोहरत के लिए, रिचर्डसन ने लिखा अपने क्रिटिक्स जो हैं उनसे बचने के लिए, फील्डिंग ने लिखा नॉवेल की जो सही रूह है उसकी सोल के लिए, और जैसे नॉवेल को होना चाहिए वैसे उसने लिखा। रिचर्डसन चला गया एपिस्टोलरी नॉवेल्स में। एपिस्टोलरी नॉवेल्स आप जानते हैं जब खतूत की शक्ल में लिखे जाते हैं कि आप किसी एक जगह पे बैठे हैं, आप खत भेजते चले जाते हैं, अगले बंदे ने वो तमाम खत छाप दिए हैं, तो वो आपके पास जो है वो नॉवेल बन गया। लेकिन जब हम इसका जो है वो एपिस्टोलरी नॉवेल्स को टॉम जोन्स के साथ जो कि पिकॉरिस नॉवल है कंपैरिजन करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ऐसा तो नॉवल इससे पहले कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक ऐसा नॉवलिस्ट है जो कि हमारे पास फ्रॉम द वेरी फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर एक ऐसी फॉर्म है जो दूसरों से मुख्तलिफ हो जाती है। ना सिर्फ मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में हो जाती है बल्कि मेथड्स में हो जाती है, एथिकल आउटलुक्स में मुख्तलिफ हो जाती है। एंड दैट इज द रीजन फील्डिंग के जोसेफ एंड्रयू को आप पढ़ के देखें जो 1742 में पब्लिश हुआ, वो क्या है हमारे पास जो है वो कहा यह जाता है कि वो पैरोडी है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उसने जो रिचर्डसन का पामिला था, जो पामिला वर्चुअल वर्डिट पे जिस पर वो बात कर रहा है, उसने बताया कि चीजें ऐसे नहीं होती। और इसी तरह से फील्डिंग का अगला नॉवल आ जाता है जोनाथन वाइल्ड के नाम से, इसको पढ़ के देखिए। 1742 में पहला आता है जोसेफ एंड्रयू, जोनाथन वाइल्ड आता है 1743 में, टॉम जॉन्स आ जाता है 1749 में। अगर नॉवल फेवरेट जॉनर है इन तमाम को पढ़ के जाइएगा। मैं आपको अभी बता दूं, इस काइंड पे 1751 में एक और पब्लिश हुआ था एमिलिया। एमिलिया आप उसको भी देखना चाहें तो देख लीजिएगा, वरना इसकी कंट्रीब्यूशन में आप रियलिज्म पे बात करोगे तो देखें जी इसने तो रियलिस्टिक बातें की, लाइक जैसा कि एफ्रा वैन उस जमाने में थी। एफ्रा वैन पहली प्रोफेशनल राइटर वो लिख रही थी। आप इसके ह्यूमर पे बात करेंगे। सर फ्रॉम वेयर यू हैव प्रिपेयर्ड ऑल दीज टू मच इन्फो। अच्छा, वो जॉफी सब फोत हो गए हैं, वरना फातिमा साहब वो कहते हैं ऐसी बातें बताई नहीं जाती। ठीक है, तो ऐसी बातें बताई नहीं जाती। अब मैं 3 बुक्स को हमेशा कंसल्ट करता हूँ और मैं आपको भी वही रिकमेंड करूंगा। पहली डेविड डिशेस की है, आपके शायद डायरेक्ट के लिंक में पढ़ी भी होगी। दूसरी विलियम जलॉन्ग की है। मैं पाकिस्तानी बुक्स को कभी भी जो है वो कंसल्ट नहीं, मैं ये लाइटर नोट पे कह रहा था, अभी मैं बता रहा हूँ आपको फातिमा साहिबा। पाकिस्तानी बुक्स के अंदर जो है याद रखिएगा, अगर मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं इंग्लिश में किताब लिखूंगा, भले मैं कितना ही काबिल हो जाऊं, भले मैं कितना ही ज्यादा जो है वो अच्छा लिख लूं, लेकिन मैं कभी भी नेटिव्स जैसा नहीं लिख सकता। हम उनकी तारीख को पढ़ने के लिए हम अपनी किताबें नहीं पढ़ सकते। आप सिर्फ इन्हीं चीजों को प्रिपेयर कर लीजिए। मेरे 4 सोर्सेज होते हैं, डेविड डेशूस की किताब है, विलियम जलॉन्ग की किताब है, रिसर्च पेपर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली, और एक ऑनलाइन सोर्स है जी स्टोर। जी स्टोर आपने अगर किसी ने देखा हो, जी स्टोर जो है वो इस तरह से है। लेकिन ये क्वेश्चंस जो हैं ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे पहले स्टूडेंट्स ने लिए। हमने हर एज में से उन क्वेश्चंस को निकाला और उन क्वेश्चंस के हमने जो है वो आंसर्स कैसे कैसे आप देंगे और कैसे कैसे आंसर्स होने चाहिए वो हम आपको बता देंगे।
इफ आई रीड ओनली जेलोंग, आप जेलोंग भी ना पढ़िए फातिमा, आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है? आप जेलोंग को भी ना पढ़िए, आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे उसमें बड़ा शॉर्ट लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहें तो डेट्स अप टू यू, वरना इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो जी ये ह्यूमर, सटायर और शॉर्ट सेंस ऑफ कॉमेडी पे आप इसके बात करेंगे। और देखें, किसी भी जब भी आप किसी नॉवलिस्ट को लिखते हैं ना, इसलिए नहीं कि उसने वाहियात किस्म का नॉवल लिख दिया है तो हमें जी हेनरी फील्डिंग तो अच्छा नहीं हो सकता। नो, प्लॉट कंस्ट्रक्शन भी एक चीज होती है जिसको समझना जरूरी होता है। तो फील्डिंग के जब हम प्लॉट कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं ना, इससे पहले ये समझ लीजिएगा कि इससे पहले कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं था नॉवल में, तो उसने कोई इल कंस्ट्रक्टेड प्लॉट नहीं दिया। उसका प्लॉट एक इस तरह का प्लॉट है जिस तरह से ड्रामाटिस्ट के अंदर होता है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको दूंगा टॉम जॉन्स की एग्जांपल। देखिए, टॉम जॉन्स के अंदर किस तरह से वो आपके पास पिकारोस नावल है, लेकिन वो टूवर्स कर रहा है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है। और यही वजह है एस.टी. कॉलरिज जो एक रोमांटिक था 1772 से 1834 तक रहा था, उसने कहा था हेनरी फील्डिंग का लिखा हुआ ये शाहकार है वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर। टॉम जॉन्स की बात की है। सो ये हमारे पास जो है वो इंशाल्लाह जी जी आप ठीक कह रहे हैं। सो जी ये हमारे पास है जी आज तक की डिस्कशन हमारी। ये है हमारे पास 18th सेंचुरी के सारे नॉवेल के मुतालिक। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर, द लाइफ ऑफ द पोएट्स, ये चीजें जरूर पढ़िएगा। क्या तैयार करना है, ठीक है, ये चीज। अज्यूमिंग देयर इज नो क्वेश्चन, वेल थैंक यू सो मच एवरीवन। रिजल्ट, हाँ फातिमा, रिजल्ट के हवाले से हम जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड ही चीजें शेयर करते हैं। जिस तरह आज भी आपने देखा होगा कि कम से कम 5-6 रिजल्ट्स हैं वो आज भी अनाउंस हुए हैं। होपफुल रह सकते हैं हम। आपका रिजल्ट कथन अगस्त का महीना तो खैर बहुत बड़ी बात मैंने कर दी, जो हमें लगता है वो अगस्त के पहले वीक तक आ जाएगा। लेकिन जब तक ये नहीं आ रहा, आपके पास इनफ टाइम है कि आप जो है वो इसको तैयार कर सकते हो। बट अगस्त इज गोइंग टू बी कैस्टिंग वोट फॉर यू, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है। तो